गोकुल माहेश्वरी जो कि 71 ईयर्स ओल्ड मेल पेशेंट है, वो चेस्ट हेवीनेस को लेकर के ओपीडी में आए। और चेस्ट हेवीनेस जब भी होता है तो कॉर्निया की डिजीज और हार्ट की नसों में ब्लॉकेज की संभावना काफ़ी होती। तो इन्होंने सीटी स्कैन के लिए प्रेफर किया और सीटी स्कैन में इनका कैल्शियम स्कोर बहुत हाई था। और जब भी कभी कैल्शियम स्कोर हाई होता है तो सीटी स्कैन में एंजियोग्राफी वाले डाई इंजेक्ट नहीं करते, उसके लिए सीधे कॉर्निया एंजियोग्राफी जो एडवाइस करते हैं, जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड है, जो कि हम हाथ की नस के द्वारा करते हैं। तो इनकी जो एंजियोग्राफी की गई हाथ के नस के द्वारा, तो उसमें हार्ट की जो 3 नसें जो होती है हमारी, उनमें से मेन नस एलईडी में काफ़ी हैवी कैल्शियम के साथ ब्लॉकेज था। और हैवी कैल्शियम के साथ ब्लॉकेज जब भी होता है तो हमारी सबसे जो न्यू एडवांस टेक्निक जो है उसमें हमेशा इमेजिंग गाइडेड एंजियोप्लास्टी करते हैं। उसमें हम एक जैसे ओसीटी यूज़ करके इंफ्रारेड कैमरा के द्वारा नस के अंदर का कैल्शियम को पूरा असेस करते हैं। कैल्शियम की थिकनेस कितनी है, कैल्शियम की लैब कितनी है, उसकी आर्क कितनी है, और उसकी बेसिस पे हम उसका कैल्शियम मॉडिफिकेशन या कैल्शियम अपग्रेडेशन करते हैं। और उसके लिए जो सबसे जो रॉबस्ट टेक्निक है वो रोटाब्लेशन है। और इनके केस में हमने रोटाब्लेशन से पूरा कैल्शियम को क्लीन किया इमेजिंग के बाद में, और कैल्शियम को क्लीन करने के बाद में फिर स्कोरिंग कटिंग बलून से और डीप कैल्शियम को कट किया, और जो बेस्ट इन क्लास ड्रग रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ ड्रग प्रोटेक्ट स्ट्रेंथ है वो यूज़ किया। और फाइनल रिजल्ट बहुत अच्छा था। और ये सब हमने इमेजिंग गाइडेंस में ओसीटी जो हमारी इमेजिंग टेक्निक है उसके अंदर किया, और उनका रिजल्ट बहुत अच्छा था, रिकवरी बहुत अच्छी थी, और विद इन 2 days ही गॉट डिस्चार्ज। I wish him a happy and healthy life ahead. Thank you. I am Gokul Maheshwari, 71 years old, staying in Jaipur. Dr. Pushpendra Garg is my family physician and a personal friend since last 45 years or so. I went to meet him after his surgery, and I asked him whether I should also go for a test. Dr. Garg suggested a CT angio to me, and while it was done, there was little calcification, hence the test could not be completed. But Dr. Garg and Mr. Ranjan Kabra of Gateway Polyclinic both suggested me to get angiography done, and they both suggested me Dr. Sanjeev Sharma of EHCC. And through reference I got an appointment. I got an appointment for Monday morning to reach in emergency. I reached in emergency on Monday morning and was admitted immediately for angiography. And then at that time I met Dr. Sharma. He was very comforting and very communicated very nicely, and I was taken for the procedure. During the angiography procedure, he comforted me a lot, and then he let me know all the facts of the surgery and the procedure. Then he suggested that we have a complex case of angioplasty, and I should better get it done. I asked him to go ahead, and the procedure was completed in almost 1.5 hours or so. The experience was, although a little tiring, but it was very good, and Dr. Sharma was wonderful all during the procedure and later on too. I think meeting Dr. Sanjeev Sharma was one of the biggest blessings in life, and that's why I call doctors are clones of God, because they only suggest us well. After my case was done all right, and there was no further complication at all, and probably I am getting discharged today. I thank Dr. Sanjeev Sharma for his kindness and his expertise of knowledge about my procedure. I wish Dr. Sharma all the best, and I
consider him a clone of God. Thank you.